शुरू करता हूं। तो अभी हो तुम कितने 25। ओके तो 25 हैं। ओके सबकी अटेंडेंस वैसे हो जाती है, इसमें रिकॉर्डिंग में आ जाता है, लेकिन अब फिर मैं जब तुम्हारी अटेंडेंस कैलकुलेट करूंगा तब मैं एक एक करके तो नहीं देखूंगा वीडियो को कि किस किस की है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो हम कर रहे थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हान-बनाक थ्योरम। एक मैंने बता दी जो तुम वहां से ले लोगे पुराने नोट से, वो भी सीधी है, उतना कुछ है नहीं उसमें। ओके सो अभी मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ हान-बनाक थ्योरम में दो और हम करते हैं, बहुत सारी कॉन्सिक्वेंस है बेसिकली, लेकिन मेन जो है वो हम करेंगे। ओके ए, तो चलो पहले लिखते हैं लेट एक्स बी ए नॉर्मल लीनियर स्पेस। Normal linear space over the field K, okay, and pehla part, let I have a non-zero vector 0 not equal to A belonging to X, then there exists, ये हम कर चुके हैं वहां भी मुझे लगता है, there is, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग करेंगे, there is some F belonging to X star such that F of A is exactly equal to norm of A and norm of F is equal to 1. Consequently, इसका ये नतीजा होगा norm of A, मीटिंग रूम में कौन है अभी, एक मिनट जरा मैं इनको एडमिट करता हूँ, कहाँ से एडमिट करना है? ओके वापस जाते हैं। Consequently, norm of A is the same thing as, which is interesting, supremum over of these sets f of x such that x belongs to x and f belongs to x star and norm of f is less than equal to। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है, और इसका बी पार्ट भी हम करेंगे साथ में। वो ये है कि लेट y be a subspace of x and A belongs to x but A does not belong to y closure, then there is a functional is some f belonging to x star such that f when restricted to y is identically 0 and it kills everything inside y, and f of A is equal to the infimum A belongs to y bar norm of A minus 1 and norm of f is equal to 1. ठीक है, consequently इसको ये भी लिखते हैं, x belongs to y bar if and only if f of x is equal to 0 for all f belonging to x star with f restricted to y being 0। चलो ये हम कर रहे हैं, मतलब ये मतलब अभी जब हम करेंगे पहले पार्ट ए करते हैं, फिर मैं पार्ट बी पे जाता हूँ। व्हाट डज इट मीन? प्रूफ ए। सो कंसिडर y to be this subspace generated by this vector A. Now look at this part A. What I have is that I've got x and y is a normal linear space. It means y closure is a closed space, and I have got A
belonging to x but a not belonging to y क्लोज, ठीक है ना। तो अगर मैं लूं, पहले तो ये है कि ये जो a होगा ये नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये सब स्पेस है तो इसमें जीरो तो होगा, जब मैं कह रहा हूं इससे बाहर है तो ये जीरो नहीं हो सकता। सो देन I can take the scalar multiples, of a, all possible scalar multiples of a, ठीक है ना, and hence y is a subspace, है ना, पहले मैं लिख देता हूँ y is a subspace of x of dimension 1 actually। now इस पे मैं एक मैप डिफाइन करूंगा, फिर मैं उसका एक्सटेंशन दिखाऊंगा बाय हान-बानक थ्योरम। now define g from y to k by g of y, which is would be the same thing as g of, क्योंकि y तुम्हें पता है क्या है, these are scalar multiples of a, so it would be some g of k a, and I write it as k times norm of a. now this is a scalar, है ना, this is a number, this is a non-negative number, k is a scalar, so this is a well-defined map from y to k, which is linear, because what would be g of y1 plus y2? अब y1 y2 अगर यहाँ है तो y1 would be some k1 times a and y2 would be some k2 times a, so this would be nothing but g of k1 plus k2 whole multiplied by a, और अगर मैं इसका फॉर्मूला लूं फंक्शन का, it would be just k1 plus k2 whole multiplied by norm of a, and needless to say that would be g1 plus, तो ये लीनियर है, ये तुम वेरीफाई कर सकते हो। now g is linear and of course continuous, and norm of g किसके बराबर होगा? norm of g as we know is supremum, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, norm of y is equal to 1 modulus of g of y, so that would be equal to y किसके बराबर है? supremum, this is straightforward, y तो होगा some ka is equal to 1, and what is g of y? It is mod of k into norm of a, which is nothing but supremum modulus of k norm of a equal to 1 of the set modulus of k into norm of a, and of course it is 1. अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो norm of g is equal to 1. And furthermore, of course, ये मतलब norm तो तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब पहले ये फंक्शनल हो, वो तो है ही, because you have got g of x, g of I in mod is equal to modulus of k into actually norm of a, which is nothing but norm of y. So continuous का मतलब actually होता है g of y. Now this is true for all y belonging to y is less than equal to some k times norm of y. ये है continuity की definition. और यहाँ पर of course k is equal to 1 और less than equal to की जगह equal to है. So indeed, and यहाँ मैं लिखता हूँ g of y is equal to norm of y for all y belonging to y. So g belongs to y star. So therefore, by हान-बानक theorem, उसका जो extension form है, हान-बानक theorem, there exists f belonging to x star such that f when restricted to y gives us g and norm of f is equal to norm of g. ठीक है? Also, it implies that rather g of a is equal to 1 is equal to norm of a. What will be g of a here? Now g of a is the same thing as g of 1 into a. So that would be scalar to 1 है, so it would be 1 into norm of a, that's equal to norm of a.
and this should also be equal to f of a. Why? Because a belongs to y, and a belongs to y, and of course f is the extension of g, so at y they are the same. For as far as the subspace y is concerned, f and g are same functions. So we are done there. And of course मैं थोड़ा यहाँ भूल गया, मैंने लिखा है हाँ ये 1 के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि norm of g is equal to 1, तो f का norm भी 1 होगा. तो हमने इसका हिस्सा काफी सब प्रूव किया. Okay, now mod of f of a, because f is a bounded linear function, is less than equal to norm of f into norm of a. For all f belonging to x star, okay, it implies that norm of a जो है, अगर मैं लूं इस तरह से, अब supremum over norm f equal to 1 या less than equal to 1. Should I write it like this? No. ये लिख सकते हैं. मुझे चाहिए it is equal to, हाँ, supremum norm of f of a. ये तो गड़बड़ हो जाएगा. हाँ ठीक है. is less than, is it would be less than equal to norm of a. ऐसे मुझे सीधा ही करना चाहिए. चलो सीधे में लिख सकता हूँ. then norm of a, मतलब बेटर इस तरह से लिखना है, is, अगर मैं लूँ क्या लिख रहा हूँ, supremum of all these moduli of f of a such that f belongs to x star and norm of f is less than equal to 1. देखो कहने का मतलब है, अगर मैं norm of f को less than equal to 1 करूंगा, then f of a would be less than equal to norm of a, है ना. उसका मतलब इस सेट का सुप्रीमम नॉर्म ऑफ ए है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो विच इज द सेम थिंग एज, इसको हम कभी कभी मतलब ऐसे भी लिख सकता था मैं डायरेक्ट, लेकिन मुझे लगा ऐसे बेटर होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ ए. सो दैट्स इंटरेस्टिंग. व्हाई? वो इस तरह से व्हाई है कि अब मैं एफ को, यू नो व्हाट इज सुप्रीमम ऑफ एफ. सुप्रीमम ऑफ एफ होता है एक्चुअली मॉडुलस, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, सुप्रीमम norm x is equal to 1 f of x. मतलब it is the definition of norm of f, right? अब हम ये कर रहे हैं कि अगर मैं x को करता हूँ less than equal to 1 और सुप्रीमम लेता हूँ, I will get norm of f. लेकिन अगर मैं x को फिक्स करता हूँ और norm of f को करता हूँ less than equal to 1, I will get norm of x. So that's the duality. इसको हम duals कहते हैं ना, ये उस duality को highlight करता है कि अगर मैं ऐसा करता, चलो मैं यहाँ लिखते हूँ, नॉर्म ऑफ एफ बराबर होता सुप्रीमम नॉर्म ए, चलो मैं लिखता हूँ, इज लेस देन इक्वल टू 1 मॉड ऑफ एफ. तो इस तरह से लिखना बेटर होगा, जिससे इसकी ड्युअलिटी क्लियर हो जाती है कि अगर मैं ए को रन करता हूँ और एफ को फिक्स करता हूँ, आई विल गेट नॉर्म ऑफ एफ. और अगर एफ को करता हूँ लेस देन इक्वल टू 1 और ए को फिक्स करता हूँ, देन आई विल गेट नॉर्म ऑफ ए. तो ये उस ड्युअलिटी को क्लियर करता है, और इससे हमारा पार्ट ए हो गया जो हम प्रूव करना चाहते थे. अब इसका बी है, एक्चुअली मुझे अलग अलग ही करना चाहिए था, क्योंकि बी में हम कह रहे हैं कि आई हैव गॉट नाउ वाई ए सबस्पेस ऑफ एक्स, सबस्पेस मेरा मतलब, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट ए प्रॉपर सबस्पेस, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट सम ए व्हिच बिलोंग्स टू एक्स बट नॉट वाई क्लोजर. ओके, देन आई कैन फाइंड अ फंक्शनल दैट किल्स वाई, यानी वाई को वो जीरो कर देता है, और ऑफ कोर्स ए पे जो उसकी डिस्टेंस है वो है इनफिमम y belongs to y norm of a minus y, स्मॉल y. हाँ इस पे मैं आता हूँ, ये इनफिमम क्या क्या मतलब है. तो जो कि हमने पढ़ा है मतलब ये p का हिस्सा नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ा पीछे जाएंगे हमने पढ़ा है अबाउट क्वोशिएंट स्पेस. अगर x एक नॉर्मल लीनियर स्पेस है and y is closed
सब स्पेस ऑफ x, मतलब दिस, इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसका b के साथ कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन हमारा रिवीजन है. Then x by y quotient space, by that I mean all cosets, space of all cosets. Of course, it's a vector space, है ना? It's not only a vector space, it's a normed linear space. और इसका जो norm है, under which norm? I have got x plus y coset norm बराबर है infimum over all y belonging to y norm of x plus this small y. And a norm is defined in terms of the norm in x. तो हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं infimum, सबसे छोटा वाला ये. This is also equal to, this can also be written as y belongs to y norm of x minus y. No issue. You know why? Because y is a subspace. अगर minus y, मतलब we are running the infimum, we are taking infimum of this set, norm of x plus y. अगर तुम्हें ऐसे देखना है, इसको पसंद है, y belongs to y. What I do, I take x with all elements of y के sum लेता हूँ, उनका norm लेता हूँ, और मैं जो सबसे छोटा है वो number लेता हूँ, और उसको मैं declare करता हूँ coset का norm. Now, of course, if y runs over y, then minus y also runs over y, because y is a subspace. So I can, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. Okay, so once I have reminded you this, we've got a quotient subspace. तो अभी हम क्या कह रहे हैं? हम ले रहे हैं कि x by y bar. तो x by y bar जो है, चूंकि y bar is a closed subspace of x, therefore it is a normal linear space, right? So let me now prove b. अभी b का proof आएगा. तो हम क्या करेंगे? Now y bar is a closed subspace of x. Consider the quotient subspace. The quotient space x by y bar. Now since a does not belong to y bar, it implies that, as you know, that a plus y bar is not equal to y bar, right? The additive identity यानी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 जो है ना क्वोशिएंट सबस्पेस में, वो y बार होता है. Additive identity of x by y bar. Okay, let me go to the next step. So therefore by part A कहता था, पार्ट ए में हमने देखा था, अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है आउटसाइड द स्पेस, तो मैं पार्ट, मतलब यू गॉट 0 नॉट इक्वल टू a belongs to x, है ना? तो then there exists f belonging to x star such that f of a is equal to norm of a and norm of f is equal to 1. तो इसी तरह से जब मैंने कहा ये इसको बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब it is not the 0 of x by y bar. So therefore by part A, there exists this f tilde belonging to the dual of x by y star such that f tilde of a plus y bar is equal to norm of a plus y bar, the coset norm, which is equal to infimum over y belongs to y bar a plus y. ठीक है? And of course norm of f tilde is equal to 1. मैंने यही चीज अप्लाई की to the quotient space x by y bar. मैं बार लगाना भूल गया. Okay, now define f from x to k to be f of x is the same thing as f tilde of x plus y bar. Now अगर मैं ऐसे define करता हूँ, now look what happens. तो पहले तो ये कि क्या well defined है. Of course, now f tilde is a map from x by y bar to k. ठीक है ना?
इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो इनसाइड के है, यानी दिस थिंग belongs to K. So this indeed defines a map from X to K as functional. Is it linear? Of course, straightforward linear hai, because F tilde is linear. Now then, so let's do it. करते हैं. Okay, साथ ही ये भी है कि f of x is equal, now चलो मैं लिख देता हूँ. Now if x belongs to y bar, it implies that f of x is equal to f tilde of x plus y bar. और अगर हमें पता है अगर सबस्पेस में कोई बिलोंग करता है तो कोसेट इज इक्वल टू दिस इज द सेम थिंग एज f of y bar. बट जो लीनियर मैप होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो को भेजता है जीरो पे. So f of x is equal to 0 for all x belonging to y bar. यानी f tilde, f नहीं, f when restricted to y is equal to 0, restricted to y bar, which means when restricted to y also, because y is contained inside y bar. तो पहला हिस्सा तो हो गया, it is the zero map as far as this y bar is concerned, ये जो हमने मैप किया f of x, and f of a, what would be f of a? F of a would be f tilde of a plus y bar, and remember this, f tilde of a plus y bar is nothing but norm of a plus y bar, right? Which is of course equal to infimum over y belongs to y bar. चाहे तो मैं इसको लिख सकता हूँ अब a plus y या a minus y, जो मैंने लिखा होगा ऊपर थ्योरम में वही लिख देना, a plus y. लेकिन अगर मैंने a minus y लिखा है थ्योरम में तो a minus y लिख देना, क्योंकि दे आर द सेम. तो पहला हिस्सा तो इसका हो गया कि हमने दिखा दिया एक फंक्शनल ऐसा है जो y बार को किल करता है, और ऑफ कोर्स f a पे जो इसकी डिस्टेंस है वो है इनफिमम. इसको मेट्रिक में हम कहते हैं, इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम y. शायद किसी बुक में तुम इसको ऐसे भी लिखो, तो मेट्रिक हिसाब से डिस्टेंस फ्रॉम a subset is defined like this, infimum of the distances of that element from to the elements of that set. तो अगर मेट्रिक में किसी एग्जाम में या किसी जगह तुम देखो इनफिमम के बजाय DAY क्लोजर या DAY जो भी यहाँ पे सबसेट है ऐसे. ओके, सो ऑफ कोर्स ये नॉन जीरो है बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू Y क्लोजर. ओके, तो ये इतना हिस्सा तो हो गया. अब नेक्स्ट चीज है कि हमें दिखाना है नॉर्म ऑफ f जो रह गया है. नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू आई थिंक 1 हमें दिखाना है. हाँ, हमें दिखाना है नॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू 1. For that also norm of f is equal to 1. हाँ, just a minute, हमें क्या दिखाना है? norm of f is equal to 1. yes, हाँ मैंने माइनस a लिखा है ना, ये f of a is equal to this thing, मैंने माइनस ही लिखा है यहाँ पे, तो तुम माइनस ही लिखो. ओके, तो where was I? Also for all x belonging to x, modulus of f of x is equal to modulus of f tilde of x plus y bar. And since f tilde is a bounded linear map, actually did we show that it's a bounded linear map? Because f tilde by Hahn-Banach theorem, it's a bounded linear map. This is less than equal to norm of f tilde into norm of x plus y bar, which would be less than equal to norm of f tilde into norm of x, right? क्योंकि infimum है और y bar में 0 भी है, यानी ये infimum है उन सभी एलिमेंट्स का. चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ. This is equal to norm of f bar, f tilde bar into infimum y belongs to y bar, norm of x plus y. और इन y's में एक 0 भी रहता है क्योंकि ये सब स्पेस है. तो अगर मैं 0 लेता हूँ, infimum सेट के किसी भी और एलिमेंट से छोटा होगा,
this is less than equal to norm of f bar into norm of x, which implies that norm of f, क्योंकि infimum of these bounds होता है, is less than equal to norm of f tilde. और दूसरी साइड से इसको अगर मैं स्टार मान लूं, now and for all y belonging to y bar, f tilde of x plus y bar can be written as f tilde of in modulus of x plus y bar, क्योंकि अगर y bar में है तो y plus y bar is the same as y bar. Now this is the same thing as by our formula f of x plus y, which of course would be less than equal to norm of f into norm of x plus y. Now this is true for all y belonging to y bar. In particular, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, this is true for all y belonging to y bar, in particular when I take y equal to 0. So but doesn't matter, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिखें, हाँ ऐसे लिख सकता हूँ, which is less than equal to norm of f, should I write it like this? This is less than equal to this x plus y, अगर मैं लेता हूँ इसको infimum, it would be less than equal to its infimum. हाँ, क्योंकि सभी के लिए है, फिर मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, which implies that f tilde of x plus y bar, क्योंकि सभी के लिए है, तो should be less than equal to norm of f into infimum y belongs to y bar of norm of x plus y, that's equal to norm of f into norm of x plus y bar coset norm, which implies that norm of f tilde is less than equal to norm of f. So therefore, by star and double star, norm of f is equal to norm of f tilde, and norm of f tilde is equal to 1. ये मैंने प्रूव नहीं किया. This would be a home assignment, क्योंकि ये शायद मैंने पिछले फंक्शन एनालिसिस 1 में किया है. ये जो जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं ना f tilde को, f tilde का नॉर्म 1 होगा. चलो ये तुम पे भी छोड़ते हूँ. f tilde नहीं ये तो एक्चुअली उससे भी हो जाता है. हाँ, दिस इज फ्रॉम a क्योंकि उसका नॉर्म जो वी आर यूजिंग a, वहां पे नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू 1, तो नॉर्म ऑफ f tilde 1 होगा. सो देयरफॉर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि a में वो हम प्रूव कर चुके हैं. सो लेट्स लीव इट देयर. अब इसके बाद एक और है, इसके बाद हम रुक जाते हैं. मुझे लगता है किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अब तक? थोड़ा सा मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है, बट लाइफ इज डिफिकल्ट, क्या करें. अगर आसान, अगर किसने कहा है, गालिब ने कहा है, अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए. अरे कोई सो रहा है, मैं ऐसे ही शेर भी बोल रहा हूँ लेकिन सब सो रहे हैं. एनीबॉडी लिसनिंग? No, sir. Yes, sir. हाँ तो फिर गालिब का ये शेर ही सुनो. क्या है वो? नहीं गालिब का नहीं, किसी और का है. लेकिन उसका दूसरा मिसरा मुझे अभी याद आ गया था कि अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए. अगर सब कुछ इजी हो तो जिंदगी में मजा ही नहीं आएगा. तो आई थिंक यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ. इन केस तुम्हें कुछ पूछना हो तो हमारे पास कुछ मिनट तो हैं, 10 मिनट के आसपास, कुछ 9 मिनट, क्योंकि अब मुझे इसके बाद नया टॉपिक शुरू करना है. हमने कुछ किया हान-बनाक थ्योरम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हान-बनाक थ्योरम. मैं चाहूंगा तुम इसको अच्छे से पढ़ो. थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन जितना मैं इसको इजी कर सकता था वो मैंने किया. नाउ आई वांट कि तुम्हें अगर अभी कुछ दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है तो उसको पूछना चाहिए, ठीक है ना? चला जाता हूँ. हाँ हाँ
सर हमारा है ना एग्जाम आज। हाँ चलो ठीक है, 4 बजे वो CI ले। सेकंड। कौन कौन स्टूडेंट है? सर पेपर सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव? मुझे लगता है सब्जेक्टिव ही रखेंगे, क्योंकि सबका सब्जेक्टिव ही रखा था। अब तुम्हारा जी फायदा है, सर। अब तुम्हारा फायदा ये है कि तुम नकल कर सकते हो, तुम 3 स्टूडेंट। नो अच्छा सर, हमने ऑलरेडी किया था ये प्रिपेयर, हमने पता नहीं कितनी बार अच्छा, कितने सिर्फ स्टूडेंट्स हैं? डाले। कितने स्टूडेंट्स हैं? सर तीन। अच्छा एक चीज करना, जो मैं भेजूँ ना, ये ईमेल में भेज देना, व्हाट्सएप पे नहीं भेज देना आंसर, क्योंकि व्हाट्सएप में इतनी सारी चीजें आती हैं, वो दिखेगा ही नहीं मुझे वहाँ। ओके सर सर। आप अपनी ईमेल ऐसे ईमेल सर है मेरा, मेल सेंड। हाँ मेल, मेल में दे देता हूँ। मेल है ये, लेट मी राइट इट डाउन। सर 10th सेमेस्टर में सेंड करना। हाँ 10th सेमेस्टर में ही मैं सेंड करूंगा। GM, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, सोफी at cukashmir.ac.in, या फिर इस पे कर दो, अगर तुम्हें ऐसे याद रहता है, 35sophie@gmail.com। ठीक है, इन दोनों में से यस किसी सर। एक पे भेजना, लेकिन इसी में भेजना। मैंने बोला ना, व्हाट्सएप पे इतनी सारी चीजें आती हैं, वहां ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आजकल किसी को कोई काम नहीं, बस व्हाट्सएप पे भेजते रहते चीज। तो हाँ, तो कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड जो हमने अब तक किया, हान बानाक थ्योरम से रिलेटेड, या